part 2 of fluorescence microscopy. We are going to discuss components of fluorescence microscopy, ray diagram and working, applications of fluorescence microscopy. Components of fluorescence microscopy. There are four major identical components of fluorescence microscopy. First is the light source. A high intensity mercury lamp is used as light source which emits white light. Second is the excitation filter. Third is the dichromatic mirror, which is also called as dichroic mirror or beam splitter. And last one is the emission filter. Here see the diagram in which you can easily see the light source, excitation filter, barrier filter and also the dichroic mirror. Ray diagram and working of fluorescence microscopy. Here we can see the light source. So here in fluorescence microscopy, high intensity mercury lamp is used as a light source. So this mercury lamp, it emits the white light, and we know that white light consists of 7 different colors. Which are that 7 different colors? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So from these 7 color, only the single color wavelength of light, that is blue color wavelength of light, is passed towards the excitation filter, and from this excitation filter, this blue light, it falls on the dichroic mirror, which is also called as a dichromatic mirror. So blue light, when falls on the dichromatic mirror, it selectively pass this blue light from this objective towards the specimen. We know that the specimen is stained with the fluorescent dye. After absorbing this blue light, the specimen gets excited, and after excitation and absorption of blue light, specimen reflect the green light, and green light, it is passed towards this objective lens, and from this objective lens, green light penetrate through this dichroic mirror, and dichroic mirror selectively pass this blue light towards the emission filter, which is also called as a barrier filter. It only select the green light, and then it is that green light is passed towards the ocular lens of the microscope. From this ocular lens, the green light is entered towards the detector and then towards the computer system where the images of the specimen is taken. So through this ocular lens and eyepiece lens, we can observe the specimen, and when it is observed, it is found that the specimen appears glowing green in color against dark background. समझ में आया यहाँ पे क्या है वर्किंग, कि ये लाइट सोर्स है. लाइट सोर्स क्या है? मर्क्यूरी लैम्प है जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है. सो हाई इंटेंसिटी मर्क्यूरी लैम्प इज़ यूज्ड एज अ लाइट सोर्स. तो एक लाइट सोर्स में, और इट इमिट्स द वाइट लाइट, और वाइट लाइट में क्या होते हैं? 7 कलर्स होते हैं. ये 7 कलर में से ओनली ब्लू लाइट क्या होती है? यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है एक्साइटेशन फिल्टर पे. एक्साइटेशन फिल्टर क्या करता है? सेलेक्टिवली ये ब्लू लाइट डाइक्रोइक मिरर के पास भेजता है. डाइक्रोइक मिरर फिर क्या करता है? ये ब्लू लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस से पास करके स्पेसिमन्स पे फॉल करता है. स्पेसिमन्स पे जब ब्लू लाइट फॉल होती है तो स्पेसिमन क्या होता है? एक्साइट होता है. क्यों एक्साइट होता है स्पेसिमन? क्योंकि स्पेसिमन को हमने फ्लोरेसेंट डाई से स्टेन किया है, और फ्लोरेसेंट डाई हैव द प्रॉपर्टी टू एब्सॉर्ब द लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट दे एब्सॉर्ब. तो ये फ्लोरेसेंट डाई क्या करते हैं? लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, और उसके हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या करते हैं? इमिट करते हैं. तो यहाँ पे स्पेसिमन में क्या किया है? ब्लू लाइट को एब्सॉर्ब किया है और ग्रीन लाइट को इमिट किया है. तो ये इमिटेड ग्रीन लाइट फिर कहाँ जाती है? ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है. ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होके ये ग्रीन लाइट जाती है डाइक्रोइक मिरर पे. डाइक्रोइक मिरर फिर सेलेक्टिवली क्या करता है? ये ग्रीन लाइट को इमिशन फिल्टर पे भेजता है. इमिशन फिल्टर और आल्सो कॉल्ड एज बैरियर फिल्टर. तो इमिशन फिल्टर से होके ये जो ग्रीन लाइट है ये ओक्यूलर लेंस में जाती है, फाइनली डिटेक्टर पे जाती है, और देन computer take the images of the specimen. When we observe this specimen through eyepiece, कि जब हम माइक्रोस्कोप में इमेज देखते हैं स्पेसिमन के, तो हमें ग्लोइंग ग्रीन कलर स्पेसिमन दिखता है, और बैकग्राउंड इज ऑब्जर्व एज अ डार्क कलर. के डार्क कलर का बैकग्राउंड और ग्लोइंग ग्रीन कलर स्पेसिमन वी कैन ऑब्जर्व थ्रू द microscope. So this is all about the ray diagram and working of fluorescence microscopy.
Working of fluorescence microscopy. We already have discussed the working of fluorescence microscopy in detail along with the ray diagram. For that I have given the notes. You read that point thoroughly so that you can write the explanation in examination. Applications of fluorescence microscopy. Fluorescence microscopy is used in biology, biomedical and material sciences. जो भी मेजर बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज हैं, मेडिकल लेबोरेटरीज हैं, वहाँ पे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है. मटेरियल साइंसेस में फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिनरल्स और मेटल्स की स्टडी करने के लिए, उनकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. It is used to identify cells, bacterial pathogens and submicroscopic cellular components with accuracy and details. Pathogens, what are pathogens? Pathogens are nothing but the disease causing agents. को different disease causing bacteria जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक मेडिकल लेबोरेटरी में यूज़ की जाती है. Some microscopic cellular structures means the structures which are present internally to the cells such as mitochondria है, nucleus है, then cytoskeleton है, endoplasmic reticulum है, गोल्गी बॉडीज है. तो ये जो सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रहते हैं सेल के अंदर, उनके स्टडी डिटेल करने के लिए भी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है. द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, DNA, RNA, एंजाइम्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी. कि सेल में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स है, DNA है, एंजाइम्स है, RNA है, उनका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए भी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज्ड इन डायग्नोस्टिक, सेल बायोलॉजी रिसर्च एंड टू ऑब्जर्व प्रोसेसेस इन लिविंग सेल्स. कि डायग्नोसिस के लिए कि डिफरेंट वी नो द डिफरेंट पैथोजेंस दे कॉज डिफरेंट डिसीजेस. तो विच पैथोजन हैव कॉज व्हाट टाइप ऑफ डिसीज दैट कैन बी डायग्नोज by using the fluorescent antibody technique, such as malaria can be diagnosed by using the fluorescent antigen antibody technique. Different types of other diseases such as cholera, hepatitis B. So large number of diseases can be diagnosed by using this fluorescence antibody technique. Then in research laboratories, fluorescence microscopy is also used for studying the different properties of the living cells, then also to observe the processes inside the cells of living organisms. कि लिविंग सेल में जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन है, क्रोमोसोम का डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन, माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन, डिफरेंट प्रोसेसेस कैसे होते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, बाइंडिंग कैसे होता है, ऑल दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस विच टेक्स प्लेस इन लिविंग सेल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी. Now see the image of Escherichia coli bacteria which is observed in fluorescence microscopy. Here we can see the green fluorescence shown by the bacteria. I hope you understood all the contents of the video. If you like my video, please share and subscribe my channel. Thank you.